Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mudassir Malik. I am the CEO of Appsgenii Technologies and CTO of Hyper Technologies. Um, so we are just setting up a new platform, a new program, Tech Talk with Malik Mudassir, which is brought to you by CxO Global Forum. CxO Global Forum is a community of CxOs within and outside Pakistan, the Pakistani diaspora around the globe. So this community, we are like 600 plus people right now, all CxOs, all verified CxOs in this group. So we actually wanted to touch base on some very sensitive as well as important topics, which are somehow very much needed to be discussed. और उसमें से एक बहुत important चीज़ है, that is the brain drain we have in Pakistan, which is going on, which is one of the biggest problems. Sometimes it is one of the biggest opportunity as well for Pakistan somehow in another way. So to discuss that, I have like two of my very good friends, Mohammed Toosy and Amir Ifftikhar. Amir Ifftikhar is based out of New York, and Mohammed Toosy is based out of Lahore, but the guy with international exposure, Ali Toosy Bhai, with the background working in fintech as well as with the financial industry. Amir Ifftikhar Bhai working very close to the government as well as with the technology, and you know what, out of the box technology solutions. So on the briefer side, I'll request Amir Iftkhar bhai to please give your introduction quickly. Ji, Assalamu alaikum. My name is Amir Ifftikhar. I'm the founder and CEO of ATC. ATC basically is like advanced technology company. We basically work on different aspects of different technologies, emerging technology. In fact, new R&D, new research work, what has been done, regardless of the sector. It could be, if anything, it could be regarding energy or automotive, robotics. It could be anything, but it has to be an emerging out-of-the-box technology. That's what basically we do. Amazing. And we have Mohammed Ali Toosy. Ali bhai. Mohammed Ali Toosy, and basically the CEO of Toosy Advisory Services. At the moment, I'm into Lean Six Sigma and change management training and consulting. And my exposure is to the east and to the west to an extent. Yes. Amazing. And Ali bhai is the change management expert, which is something very close to any company's core policies, and he's the one who specializes in that part. So let's come to the topic. We're going to keep it very precise, short, and very razor sharp. Okay, Amir bhai, first of all, you've seen both the markets, Pakistan as well as the US market. How do you see people are moving from Pakistan and the brain is getting exported globally everywhere? So we as Pakistanis, number three, number four, number two in the technology freelance market. ठीक है. When it comes to IT exports, okay, we are like nearly like $3 billion economy, but this can grow up to undocumented one goes up to nearly $5 billion. But with this brain drain, where do you see the socioeconomic hit is going to disturb and disrupt us? Thank you, Mudassir. First of all, we have to understand what is brain drain. Basically, is अगर मैं उसको आसान लफ्जों में लोगों के लिए थोड़ा सा बता सकूं, you don't mind if I just speak in letter word Urdu, right? Is that okay? Perfect. अच्छा, आसान लफ्जों में बता सकूं कि वो लोग जो कि आपके मुआशरे या आपके मुल्क या आपकी कंपनी में वैल्यू ऐड करते हैं, उस कंपनी और उस मुल्क या उस मुआशरे को ग्रो करने के लिए वो उस एनवायरनमेंट को छोड़ के जाना शुरू कर दें. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पाकिस्तान के अंदर बेसिकली अगर इसको बड़े शॉर्ट टर्म में भी ले लिया जाए तो इंसान की बेसिक जरूरियात हैं क्या? बड़ी बेसिक. ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करते हो तो थोड़ी सी अलग चीज आती है. बेसिक जरूरत है क्या इंसान की? हवा, पानी, खुराक, सेहत, ये चार चीजें बेसिक जरूरत जिंदा रहने के लिए. तालीम वगैरह ये सारा कुछ ऑफ कोर्स उसको रिफाइन करती हैं, लेकिन बेसिक ये चार जरूरियात है. ठीक है. अगर हम देख लें अपने पाकिस्तान में भी, अगर आप उस चीज को देख लें, क्या हमें हवा सेहतमंद है? एटमॉस्फेयर नहीं. आई एम सॉरी अगर कोई डिसएग्री करेगा तो. पानी सेहतमंद है? नहीं. सेहत की सहूलियत है? नहीं. खुराक खालिस है? नहीं. सॉरी टू से, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ. कोई भी इंसान इस मुआशरे का अगर जब वो इस काबिल होता है सोचने का, ये शऊर तालीम याफ्ता या शऊर सोचता है, अपनी अकल से सोचता है, यानी कि अगर उसका एक विजन होता है,
तो वो भी ये देखता है कि यार अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जाके मैं अपनी और अपने आने वाली नस्लों की जिंदगी बेहतर कर सकूं, तो व्हाई डोंट आई गो टू इन दैट एनवायरनमेंट, किसी ऐसा मुल्क में चला जाऊं जहां पे मैं एक रोजी रोटी एक मुनासिब एक जिसे आप कह सकते हैं एक अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर सकूं। ठीक है, तो वो आपके मुल्क को छोड़ के जाना शुरू करता था। जब वो छोड़ के जाता है तो जो उसकी तालीम, जो उसका एक्सपीरियंस, जो उसका टैलेंट होता है वो भी वो साथ लेके जाता है, और जिस मुल्क में वो जाता है वो जाकर उस मुल्क के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करता है। अब उससे होता क्या है कि उस मुल्क की इकोनॉमी, उस मुल्क के अंदर वो ग्रो कर रहा है। पैदा वो पाकिस्तान में हुआ, तालीम उसने पाकिस्तान में यानी कि हासिल की, जो भी उसका तजर्बा है वो उसने पाकिस्तान में लिया, लगा के वो इम्प्लीमेंट करे किसी और मुल्क के अंदर जाके उसको ग्रो करने में हेल्प करे, पाकिस्तान को नहीं करा, क्योंकि पाकिस्तान में उसको वो इन्वायरमेंट, वो सहूलियत नहीं मिल रही। इसकी वजह बेसिकली मेरी नजर में एक आप एक पौधे की एक मिसाल ले लो। आप एक बीज लगाते हो, पाकिस्तान में वो बीज लगता है, ठीक है, छोटा पौधा बनता है, स्कूलिंग सिस्टम से वो गुजरता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो फल देता है। अब वो ग्रो क्यों करता है? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट, आपका इदारे, उनका काम होता है उस पौधे को प्रॉपर खुराक देना, प्रॉपर माहौल प्रोवाइड करना, ताकि वो ग्रो कर सके, वो उग के बड़ा दरख्त बन सके, ताकि उसे फल हासिल किया जा सके। बदकिस्मती से वो चीजें उस पौधे को प्रोवाइड नहीं की जाती। जब उसका फल देने का टाइम आता है, जब वो इस काबिल होता है कि वो फल दे सके, उस पौधे को उठा के यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका, इधर उधर वो वहां मूव कर जाता है और वहां जाकर वो अपना फल देता है। और ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि उसकी जड़ें, लेकिन क्योंकि वो पौधा पाकिस्तान में पैदा हो, जड़ें उसकी फिर भी वहां पे रहती हैं। इसीलिए हम ओवरसीज पाकिस्तानी को ज्यादा तकलीफ होती है। हम जब 50 साल भी पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, लेकिन जड़ें हमारी वहां पे रहती हैं। और जड़ ही जो चीज है, जो दरख्त को जो है आपको कहते हो कि वो जो संभाल के रखती है। ठीक है, अच्छा, अब वो इन्वायरमेंट्स आपको नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर, आप उसके अंदर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मेजर रोल, सबसे बड़ी बात वो नहीं है हमारे मुल्क में। कोई भी गवर्नमेंट अपनी कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाती, एक दूसरे के हम टांगे खींचने में शुरू रहते हैं। दूसरी चीज, हमारा एजुकेशन सिस्टम, कि हम लोग उस जब पौधे को बड़ा कर रहे होते हैं, हमारा वो सिस्टम, जब वो निजाम स्कूलिंग सिस्टम से गुजरता है, वो इस काबिल नहीं है, माजरत के साथ शायद लोग एग्री करेंगे मेरे साथ, वो इस काबिल नहीं है कि वो उस पौधे को इस काबिल बना सके कि यानी कि जिसे आप कह सकते हो कि ज्यादा वो फ्लरिश कर सके। ठीक है, वही हम बेसिकली, मैं कई दफा अपने दोस्तों में बैठा हुआ ये भी कहता हूँ, हम जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के काफी मुल्कों में, इवन इन अमेरिका में, आपका एजुकेशन सिस्टम वही उसी तरह ही है। वी आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग प्री प्रोग्राम रोबोट्स, लकीर का फकीर प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। वो लोग, वो दिमाग नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो कि सोच सकें, जो कि बॉक्स से बाहर सोच सकें, जो कि इर्द गिर्द देख सकें, जिनका एक विजन हो। नो, वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग प्री प्रोग्राम रोबोट, 2+2 4, दैट्स इट। और भाई 1+3 4 भी होता है, 0+4 4 भी होता है। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट थिंग। तो वो एक बदकिस्मती हमारे मुल्क में आ जा रही है। सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल आपका जो है इंस्टेबिलिटी, वो हो रही है। माजरत के साथ मुझे थोड़ा सा शायद इस चीज को, कुछ लोगों को बुरा भी लगे इसको, तो थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट लाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, आपको वो माहौल प्रोवाइड करती है उस दरख्त को ग्रो होने के लिए। सवाल यहीं पे आ जाता है कि जो लोगों ने आपके लिए कानून साजी करनी है, वो माहौल बनाना है, आपके पार्लियामेंटेरियंस, आपके लेजिस्लेचर जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, बदकिस्मती है, दे डोंट हैव अ क्लू कि विजन क्या है। सॉरी टू से, मैं रात को बैठा कुछ थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स देख रहा था। अगर हम बात कर लेते कि अपने माहौलियात की या तालीम की, एजुकेशन की, पिछले 15 साल के अपने एजुकेशन मिनिस्टर से उठा के देख लें, उनकी प्रोफाइल चेक करें, आपको 1% बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा, शायद एक आधा मिल जाए, एक बंदा भी शायद आपको ऐसा ना मिले जो कि प्रॉपर प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट हो। 75 सालों में हम 24 करोड़ में एक एजुकेशनिस्ट या 2 एजुकेशनिस्ट पैदा नहीं कर सके जिसको हम मिनिस्टर बना सके प्रॉपर एजुकेशन। आप क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर उठा के देख लें, पिछले 15 साल के मिनिस्टर उठा के देख लें, जो भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से जो भी आए, उसमें आप एक बंदा ऐसा मुझे ढूंढ देंगे जो कि प्रोफेशनल एनवायरमेंट के लिए हो या क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट के बैकग्राउंड से आया हो, जिसको पता हो ये हमारे इलेक्टेबल्स हैं जिनको हम वोट देंगे। ये तो वो चीजें हैं जिसके ऊपर अभी हमारा फिलहाल कोई कंट्रोल नहीं है, but obviously I'm just routing the same question to Ali Toosy bhai as well,
What do you think, Ali bhai, on the brain drain side? How do you see that? I believe you have a positive side of it that as well, हाँ, but I'll give both balance it out. perspective. नहीं, मैं दोनों दूंगा. मैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों बताऊंगा, या जो रीजंस जैसे आमिर भाई ने बताए. पॉजिटिव साइड में तो ये सीधी सी बात है, बंदा जाता है, काम करता है, सीखता है, कोई बिजनेस ही देता है, कोई पैसा ही भेजता है, और जिंदगी में किसी ना किसी वक्त वापस आता है, और जब वापस आता है तो पैसे ही लेके आता है. ठीक है. और कलेक्टिवली हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो 30 बिलियन के करीब हैं, और हम लोग, हमारी एक्सपोर्ट इसके बिल्कुल करीब भी नहीं है. और दूसरी बात ये है कि अगर देखा जाए तो वी एक्चुअली सेल आवर सॉवरेनिटी फॉर वे लेस देन दैट. दैट्स द रियलिटी. अच्छा, फिर आमिर भाई की एक और, तो मैं इसको इसलिए पॉजिटिव लेता हूँ क्योंकि वापस भी आते हैं वो लोग. मैं एक एग्जांपल देता हूँ वेरी स्पेसिफिक, और ये टेक्नोलॉजी का एक है. एक लड़का है जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, यूईटी से पढ़ के आता है, लग जाता है आपके किसी प्रीमियर किस्म की आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में. प्रॉपर इंजीनियरिंग फॉर्मूले लगा के वो ब्रिज की बताता है कि यार ये इस तरीके से कॉम्पोजिशन होनी चाहिए. उसका बॉस के पास जाता है, वो मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेता है. क्वालिटी एश्योरेंस के पास जाता है, उसको वो मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेता है. तो फिर आखिर में वो पूछता है कि अगर आपने यही करना है तो फिर आपने इंजीनियर क्यों हायर किए. ठीक है. और ये मैं आपके टॉप की इस वक्त कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग द नेम. अच्छा, ये करता है वो लड़का, फिर चला जाता है पढ़ने बाहर, उनकी स्कॉलरशिप पे, हमारे स्कॉलरशिप पे नहीं. वो लड़का डिप्टी हेड ऑफ स्कूल है इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन का, टेक्नोलॉजी का. वो लड़का पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान अपने माँ बाप से मिलने आता है, और वो कहता है कि मैं जो आपके रेलवे है ना, इसकी प्रायोरिटी बता देता हूँ कि आपने ब्रिजेस को किस तरीके से मेंटेनेंस करना है, हाउ टू एक्चुअली प्रायोरिटाइज योर मेंटेनेंस. ऑब्वियसली आपका 10,000 अगर ब्रिजेस हैं, आप 10,000 ब्रिजेस को आपको पता होना चाहिए कि हर एक को तो नहीं कर सकते, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, किस वक्त करना है, उसके हिसाब से करके देता है. वही बात है आमिर भाई की. वो आता है और आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, और ये मैं काफ़ी साल पहले की बात बोल रहा हूँ, इस रिजीम की नहीं, इससे पिछले रिजीम की बात कर रहा हूँ. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, We're not वो going into the regimes, like we शुक्रिया अदा just करता है, वो say मिनिस्टर I'm आपका रेलवे पे finally शुक्रिया अदा so करता है, और उसके बाद वो कहता है सॉरी, या मैं बेसिकली हम इसमें फंस गए हैं और मिल नहीं सकता, वापस चला जाता है. तो उसने यहाँ आके करना क्या है अगर खज्जल ही होना है तो. ठीक है. अली तुझे भी एक और एलिमेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग काफी शायद एक अच्छे से नेग्लेक्ट करते आए हैं, और उस एक पर्टिकुलर एलिमेंट को जो बहुत ज्यादा इनकैश किया है, वो किया है पड़ोसी मुल्क. एंड आई विल गो वेरी सिंपल ऑन दैट. हाँ, We'll go with the Indian side, or we'll go with even the South Asian zones, जहाँ पे बहुत ज़्यादा concentrate किया गया towards training, जहाँ पे बहुत ज़्यादा concentrate किया गया towards skill development. उस particular avenue में why are we not up to mark? And I agree from the political side, yes, that's another thing. But obviously, at the same time, there is a private sector, ठीक है, जिसकी ये रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज हैं, जो ब्रेन्स हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट है. सो दे आर आल्सो स्पेंडिंग, और दे आर ट्राइंग टू स्पेंड ऑन दैट. व्हाट डू यू सी एंड वेयर डू यू सी कि ये जो ट्रेनिंग्स का एलिमेंट है, हम यहाँ पे कहाँ पे लैक करते हैं और क्यों करते हैं? क्या दिस इज बिकॉज, देखिए, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज के ऊपर ना हम लोग बहुत काम करते हैं या बहुत बातें करते हैं, उसका कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं निकाल पाते. इंडस्ट्री ने एकेडेमिया पे कोई इल्ज़ाम लगा देना है, एकेडेमिया ने इंडस्ट्री पे लगा देना, हम कहते हैं जी गार्बेज एंड गार्बेज आउट, एकेडेमिया कहती है कि जी आप आए हमारे साथ काम करें, हम वो भी नहीं करते. सो व्हाट इस देयर इज, इट कैन नॉट बी अ चिकन एग स्टोरी. ठीक है. सो योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल स्टार्ट विद अली भैया, आपसे इस पे. देखें, पहली बात जो है ना ट्रेनिंग के मामले में, ये 2 वे प्रॉब्लम है. ये ट्रेनर का भी प्रॉब्लम है और ये ट्रेनिंग का भी प्रॉब्लम है. ठीक है. हम लोगों को हल्ला गुल्ला ज़्यादा पसंद है, सब्सटेंस पसंद नहीं है. दैट्स द रियलिटी. हम लोग बाज़ औक़ात ट्रेनिंग को, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स को एज अ रिवॉर्ड के तौर पे कि चलो यार ये थोड़ा सा आराम कर ले, इस्तेमाल करते हैं, बजाय उसके कि जो वाकई ज़रूरत है. और हम लोग खुद भी ट्रेनिंग जो है ना, खुद से बगैर कंपनी के करते भी नहीं है.
और हम लोगों की जो लर्निंग है ना, वो हम अपने आप को अपडेटेड नहीं रखते। तो ये हमारा अपना भी प्रॉब्लम है। फिर उसके हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि वो उस तरह का तैयार नहीं होता है एकेडेमिया से, तो इंडिया में भी तैयार नहीं होता। इन्फोसिस में 6 महीने पहले ट्रेनिंग होती है बंदे की, जब हायर होता है फ्रेश ग्रेजुएट, और उसके बाद वो डिपार्टमेंट में जाता है। ठीक है, वी नॉट दैट स्ट्रांग इनफ टू एक्चुअली स्पेंड दैट टाइप ऑफ मनी, बट स्टिल वी कुड डू समथिंग। At least maybe if not our small companies, maybe our medium-sized companies or big companies can do it. ठीक है, ठीक है, आमिर भाई, या हम वो where करें। do you see this? Mudassir, it's not only technological training, it is also we are lacking is like business ethics, corporate ethics. Once we are at a job, जब हम काम पे होते हैं, हम उस जॉब के एथिक्स के हैं, वो भी हम बहुत ज्यादा लैक करते हैं। उसकी भी ट्रेनिंग है, जरूरी है। अब फिर वही बात आ जाती है, तो उसी से मैं वो डेफिनेटली एग्री करूंगा। हमारे चलता है, हमारा माइंडसेट है भेड़ चाल वाला। आपको याद है जब हम लोग पढ़ रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, सारा पाकिस्तान डॉक्टर बनने लगा हुआ था। इंजीनियर बन रहे थे, सारा पाकिस्तान इंजीनियर बनने लगा हुआ था। नए नए कंप्यूटर आए, सारा पाकिस्तान कंप्यूटर कर रहा था। किसी से पूछा जी बेटा क्या करते जी, कंप्यूटर करता है। की करता है पता नहीं, कंप्यूटर करता है। ओके, आजकल अगेन प्लीज, मेरे अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं इस फील्ड के अंदर, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। फ्रीलांसिंग वेरी गुड, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट वेरी गुड। अगर आप देखो, आपको हर तरफ फ्रीलांसर्स और Amazon वर्चुअल असिस्टेंट ही नजर आएंगे, विच इज एन एक्सीलेंट थिंग। चलो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रेवेन्यू लेके आ रहे हैं, दैट्स गुड। बट द प्रॉब्लम वहां पे आती है जब ये यहाँ पे रुक जाते हैं एज अ फ्रीलांसर। दे डोंट वांट टू ग्रो इनटू द अदर इंडस्ट्रीज। वाई कि एक अगर बच्चे को 2-3 लाख रुपए महीना मिल रहा है, घर बैठ के वो कमा रहे हैं, वो कहते हैं मनु की जरूरत है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने की, व्हाट डू आई नीड टू डू साइबर सिक्योरिटी में जाने की, डेटा साइंसेस में जाने की। मैं ठीक हूँ, 3-4 लाख रुपए बना रहा हूँ, आई एम गुड इनफ। टेक्निकली वो ग्रो नहीं करता। ये अब दुनिया में आप भी समझते, आप भी इंडस्ट्री में हो। पाकिस्तान में जो मुझे लगता है, और प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप लोगों को भी बीइंग इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जितना लैक ऑफ रिसोर्सेज मिलता है, पीपल हैव प्रोजेक्ट्स बट पीपल डोंट हैव दैट पर्टिकुलर टैलेंट इन पाकिस्तान जो उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके। ठीक है ना? अब वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? क्योंकि आप लोग प्रोजेक्ट्स उठा रहे हो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से, यूएस, कनाडा, ठीक है, इधर से उठा रहे हो लेटेस्ट टूल्स, लाइक tools which are involving AI, tools which are involving cyber security, tools which are involving machine learning, right? इस किस्म की चीजें आप उठा के जब लेके आते हो, उनको डेवलप करने लगते, तो आपको रिसोर्स नहीं मिलता पाकिस्तान के अंदर से। क्यों नहीं मिलता? कि वो रिसोर्स निकल नहीं रहा, वो रिसोर्स ट्रेन नहीं हो रहा। ये अब प्राइवेट सेक्टर, ये तो आपको अब यही है कि जो भी इसका एहसास करे, मींस ये प्राइवेट और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को दोनों को मिलके इसको बेसिकली कहते हैं एग्रेसिव बेसिस या बूट कैंप बेसिस के ऊपर, ये पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम बन सकता है। जितनी डिमांड इस वक्त दुनिया में है, दिस कुड बी वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम। जो बात आप कह रहे हैं, मैं if I correct me if I'm wrong on that part, what you are saying is you need to become a leader. You are not you should not be the one who is just a standard follower for anything. You need to be the Correct. leader. You need to be the trendsetter. You need to be the person who is driving things despite of the one who is just following, और उस भेड़ चाल में रह के आपने उसी तरह ही चीजों को खत्म कर देना है। ठीक है, ओके। Comparing a standard, because you've lived in UAE, you've lived in US, you've lived in Pakistan. This might go very personal, but I really want to ask you, like, give us a brief of a day and compare it when you were in Pakistan, when you were in UAE, when you were in US, how it goes on. Like, is what's the pace? How do people react? And you know what? My point here is, give us an analysis of these three different zones, because you've lived there, been there, done that. How do you see it's different, and why? If we are somewhere not up to the bar, then what's the difference? Like, इतने बुरे नहीं है हम, मगर अगर हैं तो what's the difference? यार दुखी रख को छेड़ दिया आपने। मैं एक ही चीज कहूंगा इसके अंदर, उस चीज को अगर हम मैनेज कर लेना, दिल्ली में हम कहां से कहां जा सकते हैं। वक्त की कदर, टाइम इज ऑफ एन एसेंस, टाइम इज अ वैल्यू। अच्छा,
थोड़ा सा डिफरेंस अगर आपने देखा जाए ना, तो पाकिस्तान में भी आपको हर महीने या हर शायद दूसरे हफ्ते तनख्वाह मिलती है, राइट, और महीने के हिसाब से मिलती है। यहाँ पे भी आपको मिलती है आवर के हिसाब से, पर आवर रेट आपका ये है, आपने 40 घंटे काम करना है हफ्ते में, फी घंटे के आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप उससे कैलकुलेट करें, ठीक है। अब लाजमी बात है कि व्हेन यू जस्ट चेक इन टू द ऑफिस, यू चेक आउट, आप ऑफ कोर्स उसके अंदर आपको अपना जो है ना पर मिनट कैलकुलेट होता है। अच्छा, पाकिस्तान में जो मैंने देखा है, मैं अपनी बजाती बात करूंगा, वेरी लेड बैक एनवायरनमेंट, सॉरी टू से, किसी से भी कोई बात करूं, यार काम करना हो जाएगा जी, मसला ही कोई नहीं, तो यार चलो उठो कर लेने जनाब, चक्कर ही कोई नहीं, कर लेंगे, ओके, ठीक है। आप अपनी अगर आप देख रहे हो तो आपका डे स्टार्ट किस टाइम होता है एवरेजली, अगर मैं खाली आपकी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। अ डे डज नॉट स्टार्ट बिफोर 11 AM इन द मॉर्निंग, राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 10:30 से 11 बजे के दरमियान दिन शुरू होता है आपका, जिसमें आईटी इंडस्ट्री भी कह लो, दुकानदार भी कह लो, यार इन सारे कारोबार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 11 बजे से पेस पकड़ना शुरू करते हैं, फिर जाके अब 12 बजे तक या 1 बजे तक फुली फंक्शनल आप बिजनेस मोड में आते हैं, राइट। यूएस के अंदर व्हाट टाइम द डे स्टार्ट्स, 5:30 बजे, 6 बजे। वाई, अगले ने 8 बजे ऑफिस पहुंचना, 5 बजे उठेगा, तैयार होगा, 6 बजे की बस पकड़ेगा, 7, 7:30 बजे तक वो पहुंचेगा, कॉफी लेगा, जाके ऑफिस में 10-15 मिनट पहले बैठेगा, फ्रेश अप होगा, 8 o'clock शार्प, और 8:15 मैक्स इज रेडी टू वर्क, राइट। सो यू आर राइट अवे सेविंग 3-4 घंटे यहाँ पे सीधे सीधे से बचा रहा है। ये तो आपके मजे में भी है कि दिन सुबह शुरू करो, जब बिल्कुल ठीक है। So we got the comparison for the UAE, US and Pakistan. Ali Toosy bhai, let's compare the UK and Pakistan. देखें वहाँ पे काम होता है, वहाँ पे आपके जो नॉन वैल्यू एडेड काम हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हैं, और लेड बैक एटीट्यूड वहाँ चलता नहीं है, और रिलेशंस आपके एक हद तक ही होते हैं, एक हद से ज़्यादा जाते भी नहीं हैं, और यूके में। और यहाँ पे बहुत लेड बैक है हम लोग, यहाँ तो हम नथिंग नियर व्हाट हैपेंस ओवर देयर, चले, ये तो जिसकी ये वजह से हमारी सारी प्रोडक्टिविटी का भी, वो जिसकी सारी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी का भी है, ये मैं राइट। एग्री करता हूँ कि वो सारी बुराइयां जो हमें हैं। सो व्हाट इज गुड इन अस, हम पे अच्छे क्यों हैं? People, how do you see people are going to become more productive? What are the things which, if yeah, I agree we lack so many things, but I'm sure we are good in few things as well. ठीक है, so why not, like, let's highlight them as well. What do you think we हाँ, as हम Pakistanis have लोग done अच्छे होते हैं, good? बिल्कुल, हम अच्छे होते हैं, हम अच्छे होते हैं उस पे टेक्निकली, हम लोग अपनी टेक्निकलिटी में, अपनी स्पेशलिटी में अच्छे होते हैं, ठीक, वो ठीक है, हमारी अच्छी चीज़ है, और जिसकी वजह से हमें उसका बेनिफिट मिलता है। बाज़ ठीक है, औक़ात हमारा बंदा कम टाइम लगाता है वो काम करने के लिए जो दूसरा बंदा काम कर रहा होता है, ज़्यादा टाइम लगा रहा होता है। तो बिल्कुल ये ठीक है। है। अरे दूसरी भी एक दो चीजें जो जो काफी ज्यादा मुझे डिस्टर्ब करती हैं, वो ये है कि पाकिस्तान, हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कि पाकिस्तान में यस वी हैव प्रॉब्लम्स, बट वेयर डू यू सी विद ऑल दीस प्रॉब्लम्स, आर वी नॉट द अपॉर्चुनिटी हब एज वेल? आमिर भाई, व्हाट डू यू से? यार जिस तरह वो कहा जाता है ना मुदस्सिर के, एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी, देखने वाली नजर चाहिए। इस लिहाज से मैं अक्सर, आपने भी सुना होगा, आपके साथ भी अक्सर बात होती है, मैं एक चीज बड़ी ऑफरनली कहता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर जो है ना बहुत रहमत है दो चीजों की खास तौर पे। एक, प्रॉब्लम्स बेबहा देखने वाली नजर का मतलब है कि आप उसको देखते कैसे हो, कि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी होती है किसी और बंदे की। मेरी प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, चाहे वो कारोबार में हो, चाहे वो जिस मर्जी एस्पेक्ट में हो। दूसरा, हमारा मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी रहमत है ना अल्लाह की, वो है जुगाड़। बड़ा मायूब सा लफ्ज है, लेकिन जुगाड़ को अगर आप लिटरल मीनिंग देखें ना, किसी भी मुश्किल काम को आसान और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करना, दैट इज बेसिकली जुगाड़, ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर टैलेंट इतना है माशाल्लाह, के मींस यू कैन नॉट इवन इमेजिन, जुगाड़ लगाने में एक्सीलेंट है।
सिर्फ प्रॉब्लम ये आ जाती है हम उस जुगाड़ को बिजनेस मॉडल में नहीं कन्वर्ट कर पाते। हमारी वो सोच, वो विजन नहीं है कि हम उस जुगाड़ को उस विजन से, उस पर्सपेक्टिव से देखें कि उसको हमें कारोबार में तब्दील कर लें। कई दफा यार ट्रेन पे आप चले और मोटर पे आप चले आपको इर्द गिर्द लोगों ने कई जुगाड़े आपको नजर आएंगी। मीन्स वो मोटरसाइकिल से वो पंप चला रहे हो, यू कैन यानी कि सी इमेंस थिंग्स रास्ते में, बेतहाशा चीजें आपको ऐसी नजर आ जाएंगी। ठीक है, वो क्या है, वो क्रिएटिविटी है। वो उन लोगों की, चाहे वो बंदा अनपढ़ भी है लेकिन उसने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, चाहे जैसे मर्जी किया उसने। वो मशीन नहीं लाया, उसने मोटरसाइकिल पकड़ी है, कुछ और पकड़ा है, दो लकड़ियां पकड़ी रख के उसने अपना मसला हल कर लिया। ठीक है, दैट इज बेसिकली क्रिएटिविटी। पीपल डोंट लुक एट दैट वे। मैं वही हमेशा कहता हूँ, यू नीड टू चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल, यू नीड टू चेंज। आप चीजों को देखते कैसे हो, वो नजरिया चेंज करना। Agreed. Ali Toosy bhai, एक question. Where do you see, are we Pakistanis good entrepreneurs or not? ये you cannot tag someone. You cannot Okay, put her in a I'm box tagging it as कि a एक nation. पाकिस्तानी Do जो you है, think like देखो हर बंदा एंटरप्रेन्योर नहीं होता। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, शायद वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के भी हैं, बिकॉज दे वर्क, दे परफॉर्म डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स। तो दे आर वे अहेड ऑफ द वंस हु आर एक्चुअली ऑन द अदर साइड। उसकी वजह यह है कि द अदर्स गेट फैसिलिटेटेड। The entrepreneurs over here don't get facilitated in the same way. They don't get that support. So in that perspective, our entrepreneurs are very good. Especially we have many ones who have done wonders. Right. ऐसी बात नहीं है। Okay. Despite all the problems, despite the political uncertainty, despite the leg pulling, despite the law and order situation, I mean, most of the problem, I mean, हमारा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है पाकिस्तान में कि भाई जब क्लाइंट आता है, गोरा आता है, तो सबसे पहले कहता है यार ये मैं देखूं सही धमाके कितनी हुए यहाँ पे। दैट्स द रियलिटी कि मैं किस साइड में जा रहा हूँ। तो उसको यहाँ लाना और उसको यहाँ लाना और उसको ये बावर कराना कि यार ये एक यहाँ पे अगर काम करवाओगे तो काम हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, agreed. I'll come to Amir bhai. Amir bhai, you work dynamically in so many different uh, you worked with so many dynamic organizations like government, public, private sector, in UAE, US, around the globe. What's the one thing you have learned in the whole process which is not anywhere on the internet? Value people, value time. Is this not on the internet? Everything is on the internet यार, बल्कि 2025 की सबसे बड़ी बदकिस्मती भी ये है कि to find innovation. That's another dilemma which is coming. You won't be able to come up with a new idea in 2025. That's another race. So everything is out there. Everything. Not on the internet. Everything is out there. The thing is, you just have to be a go-getter. You have to grab it. Okay. So Ali bhai, same sort of question. Like if there is like one thing which you hope like people right now who are listening to you or the audience here, they want to take that or drive that as a result to your conversation, what would that be? Become a better person, become tolerant, listen more, speak less, analyze. Okay, so this means that, and as a leader, what are the few things, three things, Amir bhai, three things, Ali bhai, as a leader, what sort of traits you should possess? Amir bhai. It's me. Yeah. Yeah, you have to practice what you preach. That's the main thing. One. Okay. You have to be a role model. You have to practically perform and show the people that what it is. You have to value your followers. You have to encourage them. You have to value them. You have to promote them. Ali bhai, three things. Ali bhai, three things. Can I have more than three? So let's keep it to three first. I'm going to tell you some leadership behaviors which is actually right in front of me, which a person needs to have: humility, calmness, wisdom, patience, objectivity, balance, and trust. These are leadership behaviors.
If you have them, these are considered value-added leadership behaviors. Okay, so these are the few things which you consider that a leader should possess. True. Value-added, yes, sure. Okay. A good leader. Pre-COVID, लीडर तो post-COVID. लीडर दजाल ने भी होना है. लीडर दजाल ने भी होना है. तो Okay, so अच्छा लीडर की बात है. we had a pre-COVID phase, then we had a COVID phase. Now I say that let's assume this is a post-COVID phase. ठीक है. We're going into 2023 now. A few things, there are obviously mistakes भी हैं, कुछ चीजें सीखी भी हैं, कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है. All those things combined together form an experience for everyone. What is your take? What is something which you as a leader would expect you are not going to do in 2023? Amir bhai. Yeah. Okay. If you can just give me 1 minute on that. Sure. पिछले ये 2 सालों में during the COVID process, ठीक है, everything has been changed. पूरी दुनिया बदल गई है, ठीक है. जब मैं कहता हूँ कि दुनिया बदल गई है तो उसमें वही मतलब होता है कि लोगों का रहन सहन बदल गया, लोगों के शॉपिंग करने के हैबिट्स बदल गए हैं, जिसकी वजह से अब ज्यादा पीपल आर गोइंग ऑनलाइन. लोगों के काम करने के हैबिट्स बदल गए हैं, ठीक है. घर पे से लोगों के वर्क एट होम एनवायरनमेंट से लोगों की अपनी अंदर जो अपनी यानी कि जिसमें कह सकते हो कि अपने बिहेवियर, उसमें काफी फर्क आ, ठीक है. थिंग्स हैव चेंज्ड. कई नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज कर गई हैं, कई नई चीजें मार्केट में आ गई हैं, कई नई जॉब्स आ गई हैं और कई पुरानी जॉब्स खत्म हो गई हैं मार्केट से. जिनको लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चलेंगे अगले 20-25 साल, ये नई जॉब्स होंगी, बट दे हैव बीन ऑब्सोलीटेड. व्हाई? बिकॉज people have changed, the business environment have changed, people's habits have changed, everything have changed. अच्छा, उसके साथ अगर जितनी जल्दी हम बीइंग पाकिस्तानीज में बात कर रहा हूँ और बीइंग इंडिविजुअल्स में बात कर रहा हूँ, दुनिया में जहां मर्जी भी बैठे हुए हम, जितनी जल्दी हम इस नई हैबिट्स को, नई चीजों को अडॉप्ट कर लेंगे, उतना ही जल्दी हम दुनिया के साथ चलना शुरू कर देंगे, वरना दुनिया नहीं रुकेगी आपके लिए. You will be left behind. We are already behind. Sorry, we are already behind, but we'll be more behind. If you need to catch up, we need to update ourselves. So my 2023 would be is adopt the environment as soon as possible in whatever environment. Alibi, what do you think? Like something which you're not going to do in 2023? What I'm not going to do? Yeah, which you've learned over the time, which you think was, I'm not going to say which was your mistake, because obviously there's a learning, which was your learning, and you are not going to carry it in the next year, and you want to change it or enhance or do differently. मेरा ख्याल है कि मैं ये जो बिहेवियर्स मैंने बताए हैं, मैं इस पे ज़रा कॉन्सेंट्रेट करके अपने अंदर पूरी तरह से लाने की कोशिश करूँगा. और एक चीज़ है जो मैं पहले मेरे में नहीं थी, अब मेरे में है, और मेरा ख्याल है कि आई वुड लाइक टू कंटिन्यू इट एंड एक्चुअली लीव द बैड हैबिट्स, is the basics which we need. I'm just going to conclude everything. The few things which I've learned in the last 30 minutes is that, okay, yes, we have brain drain, 20% good, 80% it's bad for us, and 20% good because eventually that brain drain is going to send back to the remittance, and at the end of the day they're going to come back and they're going to invest money back in Pakistan. Okay, fine, I agree to it. And the bad part is that yes, we are losing. We lost our engineers, we lost our doctors, we already lose a lot of women medicine practitioners or doctors who get their MBBS done, but they're like, you know what, they don't go back in the practice. And whoever is coming into practice, they get exported to NHS or somewhere in the US or around the globe. Okay, same goes with the tech, because people see the opportunity around the globe and they're moving because of it, and we are losing it. And this, based on the conversation, I'm just driving it. This is because of the lack of opportunities or the lack of facilities which are not on ground available, and this is the only reason people fly out, and we consider that a brain drain. So guys, first of all, thank you so much. I just wanted it not to be a super techie program. We do have tech talk.
the next program is going to be around Neom City, Saudi. So what's going on in Neom? What's new in it? What sort of opportunities we have got? We have Leap coming up in Feb. We have CES coming up in January in Vegas. Vegas. The next program is going to be around that. So and you will have some really good guests in the next program, and they're all people going to be, they're all CEOs are the ones who are going to go or going for Vegas, or they're going for the Neom City, they're going for Saudi Riyadh, and they're going for GDC as well. So Amir bhai, thank you so much for joining. Thank Ali you. bhai, for joining. And guys, we're just signing it off. Very good evening to every one of you. Enjoy your evening, and inshallah ta'ala, we'll see you next in the Tech Talk with Malik Mudassir. Inshallah. CxO. Yes. अभी भी लाइव है